Good morning, students. Uh, Today we will start unit number 2. In today's lecture, we will cover classification of mechanisms, equivalent mechanism, law of inversions of mechanisms, and single slider crank chain and its inversions. Okay. So, what is mechanism? When one of the links of a kinematic chain is fixed, the kinematic chain is known as mechanism. Okay, it may be used for transmitting or transforming motion. Okay, a mechanism with four links is known as simple mechanism, and the mechanism with more than four links is known as compound mechanism. When a mechanism is required to transmit power or to do some particular type of work, it then becomes a machine. In such cases, the various links or elements have to design to do work to do withstand the forces safely. A little consideration will show that a mechanism may be regarded as a machine in which each part is reduced to simplest form to transmit the required motion. Okay. Now the classification of mechanism. Mechanisms may be classified on the basis of according to the movement of the links, and second is the classification according to the application and operation of the mechanism. So classification of mechanism based on movement of the links. Mechanisms classified as the mechanism to realize composite movement. Okay, first classification, the mechanisms relies to locus of points. किसी पॉइंट को मैकेनिज्म जैसे पेंटोग्राफ में एक पॉइंट आपका मूव करता है लोकस के लॉन्ग या इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटिंग डिवाइस जो हम लोग इंडिकेटर डिवाइस यूज करते हैं किसी भी इंटरनल कंबशन इंजन के सिलेंडर के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच कर्व ड्रॉ करने के लिए, ये भी आपका लोकस ऑफ पॉइंट्स के लिए मैकेनिज्म हो गए. द रेसिप्रोकेटिंग मोशन मैकेनिज्म, द रोटेटिंग मैकेनिज्म, रेसिप्रोकेटिंग स्विंग मैकेनिज्म, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट मैकेनिज्म, द रोटेटिंग मैकेनिज्म to realize non-uniform motion. So according to the movement of the links in a mechanism are classified as by these 7 categories. Okay, now the classification according to the application of operation. uh, the mechanism can be classified as 5 types.
First is the mechanism with uniform continuous rotation हो किसी mechanism. The operating mechanism to realize displacement, directional and protective mechanisms, and the productive operation mechanisms, and the last is spatial function mechanisms. Okay, simply we can classify the mechanism in two parts: to transmit motion and to convert motion. Okay, so transmit motion, if a mechanism transmit in linear motion or rotatory motion, and there are only two motions in a mechanism of a link. The link may be move in a line, or a link may be rotate about a point. Okay. Now come to the next topic: equivalent mechanisms. A mechanism with higher pairs may be replaced by an equivalent mechanism along lower pairs. हम किसी भी higher pair mechanism को lower pair mechanism से replace कर सकते हैं. Okay. This equivalence is only applicable for studying the instantaneous characteristics. ये सिर्फ study करने के लिए है. Okay. So equivalent mechanism. Okay. A mechanism along higher pair is shown in figure A. In first figure, there is a point contact between these two links, link 2 and link 3, in which links 2 and 3 contain general shape and contain higher pair at P. Okay, I already told you that the link 2 and 3 contact at the point P uh, along a point along a point. Okay, the relative motion among links 2 and 3 consists of rolling coupled along an uncertain amount of sliding. Okay, A and B are centers of curvature of surface 2 and 3 respectively at the point P. Okay, the instantaneous equivalent lower pair mechanism is shown in figure B. The diagram shows in right side of the figure that has an additional link AB having two revolute pairs at A and B. Therefore, a higher pair is replaced by two revolute pairs at A and B. We can replace this higher pair with this link, with this mechanism, in which one more additional link is required. Okay, and A point is the center of gravity point of link 2, and B is the center of gravity point of link 3. Okay. So we can replace this higher pair by this lower pair mechanism. Okay. Now consider another example for equivalent mechanisms. Likewise, to this mechanism, a cam and follower mechanism also contain higher pair. Okay, as shown in figure A. As shown in figure A, link 2 is a cam rotating about the point O2, and link 3 is a follower. Due to the rotation of the cam,
follower moves reciprocally along the link 1, fixed link 1, upward and downward direction. Okay, due to the rotation of this cam about the point O2, the follower 3, link follower 3, reciprocates along the fixed link 1 in upward and downward direction. Okay, at this point, cam contact with the follower at a point. Okay, so this is a higher pair. Uh, at an equivalent lower pair mechanism is shown in figure B, the slider link 4. Here, this link 2C, which is this straight link bar, is connected with a slider, and here follower has a slotted uh, slotted slot in the follower. Okay, the slider link 4 is an added link, and higher pair is replaced through two pairs that are one revolute and the other prismatic. Point C center is center of curvature of the cam surface at point of contact. So here C is the center of gravity point of this follower, and if this O2C link rotates about the point 2, then the follower moves, the link 3 will move along this fixed link 1 up in upward and downward direction as uh, the follower moves due to the rotation of the cam in the figure A. Okay, so the diagram shows in the figure B is the equivalent mechanism of the cam and follower shown in the figure. Okay, now come to the next topic, inversions of mechanism. Inversions of mechanism. When one of links is fixed in a kinematic chain, it is called a mechanism. Okay, as we know that when one of links is fixed in a kinematic chain, it is called mechanism. So we can obtain as many mechanisms as the number of links in a kinematic chain by fixing in turn different links in a kinematic chain. Okay, अगर हम किसी काइनेमेटिक चेन में डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स को फिक्स करें तो हम उससे डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स बना सकते हैं. ओके, so this method of obtaining different mechanism by fixing different links in a kinematic chain is known as inversion of mechanism. So, inversion of mechanism basically मेथड, ऐसा मेथड जिसमें हम एक मैकेनिज्म में अलग अलग लिंक्स को फिक्स करके, एक काइनेमेटिक चेन में डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स को फिक्स करके डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स हम जो फाइंड आउट करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, तो इस मेथड को इन्वर्जन्स ऑफ मैकेनिज्म कहा जाता है. ओके, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन्स. The most important kinematic chains are those which consist of four lower pairs, each pair being a sliding pair or turning pair. The following three types of kinematic chain with four lower pairs are important from the subject point of view. So, first type of kinematic chain is 4-bar or quadric cyclic chain. Second type of kinematic chain is single slider crank chain, and the third kinematic chain is double slider crank chain. Okay,
फोर बार चेन और क्वाड्रिक साइक्लिक चेन साइकिल चेन बेसिकली क्या होता है, इसको स्टडी करते हैं। द काइनेमेटिक चेन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फोर और मोर काइनेमेटिक पेयर्स। ओके, such that the relative motion between the links or elements is completely constrained. What is the meaning of completely constrained motion? When the motion of the link is fixed with respect to other link, okay, without consideration the direction of force, the motion between the links is known as completely constrained motion. Okay. The simplest and basic kinematic chain is a four bar chain. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में कि फोर बार चेन से कोई बेसिक चेन नहीं हो सकती, इससे कम लिंक से आप कोई काइनेमेटिक चेन नहीं बना सकते। तो ये एक सिंपलेस्ट और बेसिक काइनेमेटिक चेन है आपका फोर बार चेन। It consists of four links, each of them forms a turning pair. ये फोर बार चेन काइनेमेटिक चेन में फोर लिंक्स होते हैं और फोर जॉइंट्स इसमें पेयर्स होते हैं, और सारे के सारे जो जॉइंट्स हैं पेयर्स हैं वो टर्निंग पेयर्स होते हैं। ओके, द फोर लिंक्स में बी डिफरेंट लेंथ। अच्छा, इसमें जो लेंथ होती है लिंक्स की वो डिफरेंट हो सकती है। ओके, in this figure a four bar kinematic chain has been shown, and the link 1 is fixed in this kinematic chain, four bar chain. So this kinematic chain will now a mechanism. Okay, so according to Grashoff's law, for a four bar mechanism, ग्रेसॉफ्स ने एक लॉ दिया था फोर बार मैकेनिज्म्स के लिए। द सम ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ should not be greater than the sum of the remaining two links length if there is to be continuous relative motion between the two links. So for a four bar mechanism, it is compulsory that the sum of shortest and longest link length should not be greater than the sum of the remaining two link lengths for the continuous relative motion between the links. Okay, जो सबसे छोटी लिंक है और जो सबसे बड़ी लिंक है उनकी लेंथ का सम अदर टू लिंक की लेंथ के सम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ही फोर बार मैकेनिज्म के लिंक्स के रिस्पेक्टिवली मोशन हो सकते हैं, नहीं तो मोशन पॉसिबल नहीं है फोर बार चेन में। सो दिस इज द ग्रेसॉफ्स लॉ, very important law for the four bar chain. In a four bar chain, one of the links, in particular the shortest link, will make a complete revolution relative to the other three links. If it satisfies the Grashoff's law, such a link is known as crank or driver. Okay, actually फोर बार मैकेनिज्म में जो सबसे शॉर्टेस्ट लिंक है आपका वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट सर्किल, एक रिवॉल्यूशन, उसका रिवॉल्यूशन हो सकता है किसी उसके एक सेंटर पॉइंट के अलोंग। तो यहाँ पर डायग्राम में लिंक 4 पॉइंट ए के अबाउट रोटेट कर सकता है। लिंक एडी स्मॉलेस्ट लिंक है। ओके, तो इसे लिंक एडी को जो कंप्लीट कर सकता है एक रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू द अदर थ्री लिंक्स,
तो इसे हम एडी को कहेंगे यहाँ पर क्रैंक और ड्राइवर। ओके, दिस इज द क्रैंक और ड्राइवर। The link BC, which makes a partial rotation or oscillates, is known as lever or rocker or follower, and the link CD, which connects the crank and lever, is called connecting rod or coupler. Okay, the link which makes if the link 4 rotates about the point A, okay, then the uh, link BC partially link BC oscillates about the point B. Okay, link 2 will oscillate about the point B due to the complete rotation of the link AD about the point A. This link BC in this 4-bar mechanism is known as lever or rocker or follower. Okay, इस लिंक 2 को हम लोग या तो लीवर कहते हैं, रॉकर कहते हैं, फॉलोअर कहते हैं, क्योंकि लिंक 4 के रोटेशन की वजह से ये ऑक्सीलेट करेगा पॉइंट बी के अलोंग। ओके, लाइक दिस, इसका कंप्लीट रोटेशन नहीं हो पाएगा यहाँ पर। ओके, and the link 3 which connects the crank and lever is known as connecting rod or coupler. Here link 3 is known as connecting rod or coupler. जो लिंक यहाँ पर लिंक डी सी डी जो है वो क्रैंक को लीवर से कनेक्ट कर रही है, तो इसे कनेक्टिंग रॉड या फिर कपलर कहते हैं हम लोग। एंड द फिक्स लिंक ए बी इज नोन एज फ्रेम ऑफ द मैकेनिज्म, और जो भी लिंक फिक्स किया जाता है उसे फ्रेम ऑफ द मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ पर लिंक 1 फिक्स है तो ये फ्रेम हो गया। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो लिंक ए बी इज द फ्रेम, link AD is a crank or driver which rotates about the point A and it can complete a rotation about the point A. Link CD is a connecting rod or a coupler because it connects the crank with the lever or rocker arm, which is link BC. Okay, some inversions of 4-bar chains. First is beam engine, crank and lever mechanism. Second is coupling rod of a locomotive. Second is Watt's indicator mechanism or double lever mechanism. Okay, हम 4-bar chain की 3 inversions को डिस्कस करेंगे। ओके, बीम इंजन, coupling rod of a locomotive and Watt's indicator mechanism. Okay, now what is a beam engine? Here in this mechanism, link AB rotates about the point A. Here the fixed link is known as frame. This is the link 1. Link AB or 2 rotates the point A. This is the crank of the mechanism. Link BC connects the crank with the lever. Lever is pin jointed at the point D, and the point E oscillates if the link AB rotates about the point A. Okay, this is the connecting rod. So point E of the lever will oscillate
if the crank is rotating about the point A, rotates about the point A. The mechanism will end at this point E. Okay, point E is further connected with a piston rod, and this piston rod is connected with the piston, which reciprocates along the cylinder, in the cylinder. Okay, so it is a very simple mechanism used for many purposes. Okay, we wait a minute, I will show a video for this. Okay, Wait! यहाँ पर ग्रीन कलर में जो हम देख रहे हैं, ये हमारा क्रैंक है। क्रैंक, this is our connecting rod, this is frame, this is our lever or rocker arm. This is how a beam engine works. When this green link crank rotates about a point A, the connecting rod moves the rocker arm or lever, and this lever oscillates about the point, this point. Okay, so it is a very simple mechanism, forward mechanism. I hope you can understand this, the working of this mechanism. Now come to the next inversion of 4-bar chain, which is coupling rod of a locomotive. Okay, कपलिंग रॉड ऑफ ए लोकोमोटिव, यहाँ पर व्हील्स हैं हमारे पास दो, और यहाँ पर इन्हें कनेक्ट किया गया है ए बी पॉइंट से। ये फिक्स्ड फ्रेम से कनेक्टेड हैं। बी सी यहाँ पर क्रैंक है और एक दूसरा क्रैंक भी है ए डी, इसीलिए इसे डबल क्रैंक मैकेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लिंक अपने सेंटर पॉइंट के अबाउट कंप्लीट रोटेशन कर सकते हैं। दोनों क्रैंक्स के जो फ्री एंड्स हैं सी और डी, उनको एक कनेक्टिंग रॉड से कपल किया गया है लिंक 3 से। अगर लिंक सी भी रोटेट होगा अबाउट द पॉइंट बी, सो इन दिस केस लिंक ए डी विल आल्सो रोटेट्स अबाउट द पॉइंट ए। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है, आप इससे समझ सकते हैं कपलिंग रॉड ऑफ ए लोकोमोटिव। ओके, next inversion is Watt's indicator mechanism. Watt's indicator mechanism. This mechanism is used for draw the pressure and versus volume diagram for a cylinder. तो इसमें क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये एक यहाँ पर इंडिकेटर प्लंजर है और ये एक इंडिकेटर सिलेंडर। इसके एक पॉइंट को कनेक्ट कर दिया जाता है इंटरनल कंबशन इंजन से, के सिलेंडर के थ्रू, सिलेंडर से।
सिलेंडर में जो भी प्रेशर वैरी होता है वो प्रेशर इस सिलेंडर के अंदर भी होता है। तो प्रेशर के अकॉर्डिंग ये जो लिंक एफ, पॉइंट एफ है, ये मूव करता है। और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर कितना प्रेशर आपके सिलेंडर के अंदर है, इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, है ना। इसीलिए इसे इंडिकेटर मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ पर फिक्स लिंक है हमारे पास एक, ओके। हमारे पास एक लिंक है एसी। एसी लिंक से पॉइंट बी पर एफ बी लिंक कनेक्टेड है, पिन ज्वाइंटेड है। और एफ डी लिंक पिन ज्वाइंटेड है सी एफ। ये बी एफ डी एक लीवर है, एक फिक्स लिंक है, ओके। और पॉइंट सी पिन ज्वाइंटेड है, बी पिन ज्वाइंटेड है और डी पॉइंट पिन ज्वाइंटेड है। पॉइंट एफ अगर मूव करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन में आपका पॉइंट ई भी रोटेट करेगा। यहाँ पर स्केल होता है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग, मूवमेंट के अकॉर्डिंग प्रेशर आपका हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि सिलेंडर में कितना प्रेशर उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना प्रेशर अवेलेबल है। इसको, इसका भी स्मॉल मैकेनिज्म हम समझते हैं। लोकोमोटिव कपलर, जो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, सिंपल। ओके, नाउ कम टू दी वॉट्स इंडिकेटर। No, don't have the animation of the Watts integrator mechanism. Okay. Now come to the next kinematic chain, which is single slider crank chain. Okay. A single slider crank chain is a modification of the basic 4-bar chain. It consists of one sliding pair and three turning pairs. It is usually found in reciprocating steam engine mechanisms. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट से फिक्स फ्रेम से क्रैंक कनेक्ट किया गया एक पॉइंट, और जो क्रैंक टू है, लिंक टू उस फिक्स्ड पॉइंट जहाँ पे ज्वाइन किया गया है, इसे उस पॉइंट के अलॉन्ग, फ्रेम के अलॉन्ग कंप्लीट रोटेशन कर सकता है, रोटेट हो सकता है। इसके दूसरे एंड को, क्रैंक के लिंक टू के दूसरे एंड को कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पर एक गाइड सरफेसेस बोल सकते हैं, उसके अलॉन्ग पिस्टन है, क्रॉस हेड बोलते हैं जिसे। क्रॉस हेड से कनेक्टिंग रॉड को यहाँ पर पिन ज्वाइन किया गया है। अगर क्रैंक रोटेट होगा तो क्रॉस हेड रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा अलॉन्ग द गाइड्स, ओके। तो इसे हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन सिंपली हम लोग बोलते हैं। इसके कुछ इन्वर्जन्स हैं हमारे पास, जैसे पेंडुलम पंप हमारा एक फर्स्ट इन्वर्जन है ना। सेकंड इन्वर्जन ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन है हमारे लिए, यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड को फिक्स किया जाता है। पेंडुलम पंप में बेसिकली जो फिक्स की जाती है वो है सिलेंडर। नेक्स्ट है रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन, यहाँ पर क्रैंक फिक्स होता है।
फोर्थ, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये। ओके, ये शेपर मशीन्स में ये मैकेनिज्म यूज किया जाता है। सेकंड है विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ओके, तो 5 इन्वर्जन हमें सिंगल थ्रेडर क्रैंक चेन के स्टडी करने हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट इन्वर्जन, पेंडुलम पंप और बुल इंजन। पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं इसमें किस तरीके से आपके लिंक्स हैं और कैसे मूव करते हैं। उसके बाद एक एनिमेशन के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इसके मोशन को। यहाँ पर दो सिलेंडर्स हैं हमारे, एक अपवर्ड टॉप में, एक बॉटम में। इन दोनों में एक पिस्टन है और पिस्टन एक रॉड के थ्रू, पिस्टन रॉड के थ्रू उन दोनों पिस्टन्स को कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। ओके, अपर सिलेंडर के टॉप सिलेंडर के एक पॉइंट पर, सिलेंडर सरफेस पर एक पॉइंट ए से एक कनेक्टिंग रॉड को यहाँ पर पिन ज्वाइंट किया गया है। ओके, लिंक 3। और ये जो हमारा पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड के एक सेंटर पॉइंट पर क्रैंक को कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ कनेक्टिंग रॉड हमारा फिक्स है, एक पॉइंट ए से पिन ज्वाइंटेड है। जब कनेक्टिंग रॉड ऑक्सीलेट या क्रैंक रोटेट करेगा, तो ये क्रैंक रोटेशन की वजह से कनेक्टिंग रॉड ऑक्सीलेट करेगा और ऑक्सीलेशन की वजह से आपके पिस्टन रॉड मूव करेंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देख लेते हैं पेंडुलम पंप एक किस तरह से पेंडुलम पंप वर्क करते हैं। यहाँ आप देखिए मूवमेंट, कनेक्टिंग रॉड ऑक्सीलेट कर रहा है और पिस्टन रॉड अपना ये पिस्टन रॉड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पिस्टन कनेक्टेड है वो अपर और टॉप बॉटम सिलेंडर्स में रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। कनेक्टिंग रॉड को सिलेंडर वॉल के अपर आउटर सरफेस से पिन ज्वाइन किया गया, देखिए आप साइड व्यू से देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो दिस इज पेंडुलम पंप और बुल इंजन। सेकेंड इज ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन। यहाँ पर जो इंजन है उसे फ्रेम से एक पॉइंट पर पिन जॉइंट कर दिया जाता है। तो ये जो सिलेंडर है बेसिकली पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेट कर सकता है, फ्री है। ओके, पिन जॉइंटेड है, फिक्स नहीं किया गया सिलेंडर को। ओके, कनेक्टिंग रॉड जो यहाँ पर है उसे फिक्स किया गया है और क्रैंक जब रोटेट करेगा डायरेक्टली उसे पिस्टन रॉड से कनेक्ट किया गया है। क्रैंक के रोटेशन की वजह से पिस्टन पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा सिलेंडर में। ओके, और जब पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा सिलेंडर में, सिलेंडर फिक्स नहीं होने की वजह से, सिलेंडर फिक्स नहीं है तो सिलेंडर अपने इस पॉइंट के अबाउट जो फिक्स एंड पर इस पे कनेक्ट किया गया है उसके अलोंग यहाँ पर ऑक्सीलेशन होगा। ओके, ऑक्सीलेट करेगा। इसको भी एक एनिमेशन के थ्रू समझते हैं हम कि ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर कैसे वर्क करता है। ओके, दिस इज हाउ ए ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर वर्क। क्रैंक रोटेट करेगा, यहाँ कनेक्टिंग रॉड फिक्स है,
सिलेंडर को फ्रेम के साथ पिन जॉइंट किया गया है। क्रैंक के रोटेशन की वजह से पिस्टन जब रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा सिलेंडर के अलोंग, तो आपका ये सिलेंडर ऑक्सीलेट करेगा पिन जॉइंट के अलोंग जो फ्रेम से कनेक्टेड है। ओके, now come to the next inversion of single slider crank chain, which is rotary internal combustion engine. रोटरी इंटरनल कम्बशन इंजन्स में ये इंजन बनाए गए थे लाइट वेट के लिए, के ग्लाइडर्स में यूज करने के लिए। यहाँ सिलेंडर्स एक सर्किल की सर्कमफ्रेंस के अलोंग अरेंज्ड होते हैं, है ना, सर्किल के अलोंग अरेंज होते हैं। और इन सभी इंजन्स की कनेक्टिंग रॉड एक पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं, कॉमन पॉइंट पर, और वो एक क्रैंक के साथ फिक्स कर दिए जाते हैं। यहाँ क्रैंक, यहाँ पर एक पॉइंट पर पिन जॉइंटेड है। क्रैंक अगर रोटेट होगा तो उसके रेस्पेक्ट में ये कनेक्टिंग रॉड्स डायरेक्टली जो कनेक्ट हैं आपके क्रैंक के थ्रू, वो कनेक्टिंग रॉड्स पिस्टन को रेसिप्रोकेट कराएंगे रिस्पेक्टिव पिस्टन्स को रिस्पेक्टिवली। ओके, अगर क्रैंक रोटेट होगा। हम्म, ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, इसमें इतना डिफिकल्टीज नहीं है समझने में। Inversion of single slider crank chain of a rotary internal combustion engine. Now, crank and slotted lever quick return motion mechanism, very important mechanism. इसमें आप देखें जो फिक्स लिंक है हमारा, ओके, फिक्स लिंक ए बी, बी पॉइंट से एक क्रैंक हमारा कनेक्टेड है बी सी, सी पॉइंट ए सी फिक्स लिंक है। सी पॉइंट पर हमारा एक क्रैंक कनेक्टेड है, सी पॉइंट पर पिन ज्वाइंटेड है ये लिंक। और बी सी, सी बी आपका ये लिंक है, ये लिंक रोटेट कर सकता है पॉइंट सी के अलोंग। ये डॉटेड पिंक सर्किल से इसके पाथ को शो किया गया है यहाँ पर। पॉइंट ए पर एक दूसरा लिंक कनेक्टेड है, ये स्लॉटेड लीवर है। इसमें इस लीवर, इस लिंक के इन साइड में स्लॉट है, और उस स्लॉट में एक स्लाइडर को फिट किया जाता है, और स्लाइडर के एक एंड पॉइंट पर कनेक्ट, क्रैंक के दूसरे अदर पॉइंट, फ्री एंड पॉइंट को बी पॉइंट पर कनेक्ट किया गया है। इस मैकेनिज्म में अगर ये क्रैंक रोटेट होगा पॉइंट सी के अबाउट, तो इसके अलोंग स्लाइडर जो आपका स्लॉटेड रॉड में फिट किया गया है, ये इस रॉड में रेसिप्रोकेट स्लाइड करेगा, बेसिकली स्लाइडिंग होगी, और स्लाइड होने की वजह से ये पूरी स्लॉटेड बार पॉइंट ए के अबाउट ऑक्सीलेट करेगा P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक। इसके पाथ को यहाँ शो किया गया है पिंक पॉइंट से P1 टू P2। बेसिकली इस मैकेनिज्म को क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्यों कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एक स्लॉटेड लीवर यूज किया जा रहा है, क्रैंक हमारे पास, इसमें क्रैंक रोटेट करता है तो स्लॉटेड लीवर में जो जो स्लाइडर है वो उसमें स्लाइड करता है, जिसकी वजह से स्लॉटेड लीवर ऑक्सीलेट करता है। ओके, आउटपुट इसे क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म भी कहा जा रहा है आगे। तो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म क्यों है ये, इसको स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली
क्रैंक B1 पॉइंट से रोटेट करना स्टार्ट करता है, यहाँ पे आप मान लीजिए, तो उस पॉइंट पर जो स्लॉटेड बार है उसका पोजीशन होगा P1 पॉइंट पर। क्लियर? फर्दर B1 पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रैंक रोटेट होके B2 पॉइंट पर आया, तो जो उसके रिस्पेक्ट में स्लॉटेड लीवर का जो पोजीशन होगा वो P2 पॉइंट होगा। फिर P2 टू P1, जब B2 टू B1 आपका क्रैंक रोटेट होगा तो स्लॉटेड बार उसी के रिस्पेक्ट में P2 से P1 पॉइंट पर मूव करेगा। यहाँ पर आप देखें तो क्रैंक का रोटेशन तो कांस्टेंट है, n आरपीएम से रोटेट होंगे ये, बट उसके रिस्पेक्ट में P1 P2 यानी स्लॉटेड बार की जो पोजीशंस है, एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, वो अलग अलग पॉइंट पर वैरी कर रही है। जैसे क्या मतलब, जब P1 पॉइंट से P2 पॉइंट की तरफ आपका स्लॉटेड बार जा रहा है तो क्रैंक को B1 पॉइंट से B2 पॉइंट तक रोटेशन करना पड़ रहा है। ये एंगल बीटा एंगल जो बना रहा है वो जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है ये आपका, तो रिटर्न स्ट्रोक में जो एंगल बना रहा है B2 to B1 वो कम है, बीटा एंगल ज़्यादा है। तो इस B1 से B2 पॉइंट तक जाने के लिए क्रैंक को ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना होगा, और B2 to B1 यानी कि रिटर्न स्ट्रोक जब आपका होगा तो उस पॉइंट पर क्रैंक आपका B2 से B1 पॉइंट जाने के लिए कंपैरेटिवली फर्स्ट स्ट्रोक से कम टाइम लेगा। तो इस यहाँ पर देखें, जो हमारा ये स्लॉटेड लीवर है, स्लॉटेड लीवर विल कनेक्टेड here, slotted lever is connected with the ram, or ram is having a tool, okay, in shaper machine or a planer machine. uh, we want that the mach- actually shaper machine, uh, in forward stroke, okay, when the tool moves towards the right, this is the uh, मशीन स्ट्रोक। इस जब आपका रैम राइट साइड में मूव करता है यहाँ पर, तो फॉरवर्ड स्ट्रोक की कंडीशन में मशीनिंग आपका ऑपरेशन होता है, मशीनिंग होती है। और जब आपका ये टूल रिटर्न वापस आता है तो उस कंडीशन में मशीनिंग नहीं होती है, बस उसके ऊपर से गाइड करता हुआ वर्क पीस के ऊपर से आपका टूल रिटर्न करता है। जब रिटर्न में कोई मशीनिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो जो अगर मशीन का रिटर्निंग टाइम कम कर दिया जाए और फॉरवर्ड स्ट्रोक में मशीनिंग हो रही है तो वहाँ पर हमें आरपीएम कम, हमें स्पीड कम चाहिए, ओके। तो अगर उस टाइम को इंक्रीज कर दिया जाए तो ये बेनिफिट होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी मशीन की। तो इस क्विक क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म की हेल्प से हम लोग इस चीज को अचीव कर सकते हैं, ओके। क्योंकि वीडियो की हेल्प से इसको हम आज समझते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ग्रीन कलर से जो आप देख रहे हैं ये क्रैंक है, और ये इस क्रैंक से रेड कलर में स्लाइडर है। ब्लू कलर में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारी स्लॉटेड बार है। स्लॉटेड बार के अदर एंड से कनेक्टिंग रॉड से एक रैम को कनेक्ट किया गया है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है उस वो स्लो है इन कंपैरिजन टू द रिटर्न स्ट्रोक। ओके, लास्ट इन्वर्जन है विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, तो जो कटिंग स्ट्रोक है इसमें भी कटिंग स्ट्रोक स्लो होता है
कटिंग स्ट्रोक में टूल की स्पीड स्लो होती है इन कंपैरिजन टू द रिटर्न स्ट्रोक। ओके, इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।